Hello guys, I'm your friend and FSSI guide Sagar Shirke. Sign in and thank you so much for watching this video. I'm your host and दोस्त सागर शिर्के और आज हम डिस्कस करने वाले हैं FSSI गाइड इस चैनल पे फूड सेफ्टी। ठीक है, तो फूड सेफ्टी बाय food technologist Sagar Shirke. So let's talk about it. So why we study food safety? Because to maintain consumer safety, to avoid the loss of business, to avoid law compliances, to maintain the customer trust and to maintain quality standards of food. ठीक है, तो इसके लिए हम फूड स्टडी करते हैं और फूड सेफ्टी। ठीक है, तो फूड सेफ्टी refers to the measures and principles that measures and practices. एक minute, sorry, I think it's a little bit. Food safety refers to the measures and practices that are uh, implemented to ensure that food remains safe to eat, free from contamination or hazards that could cause harm to the consumer. This includes various steps taken throughout the food production, processing, storage, transportation, and preparation chain to minimize risk to human health. ठीक है, तो key aspects of the food safety. What are the key aspects like hygiene, storage, handling, cooking, labeling, and traceability? Regulation and standards, education and training, risk assessment and management. These are the food safety key aspects. Then then food contamination. There are food contamination तीन वजह से होता है. First is the chemical contamination like pesticides, detergents, etc. Then physical contamination like equipments, dirty equipments and their parts, hair, skin, and nails. Then microbial bacteria, through microbial like bacteria, fungi and viruses. These are the food contamination factors. ठीक है, three physical, chemical and biological. तो ये तीन factor याद रखना. Then food contamination. केमिकल जो अभी हमने डिस्कस किए हाउ टू प्रिवेंट फिजिकल हजार्ड्स। तो अगर कोई फिजिकल हजार्ड होता है लाइक हेयर रेजिस्टेंस यूजिंग हेयर कैप यूज करनी है हेयर के लिए, लॉन्ग स्लीव्स फॉर यूनिफॉर्म। अगर आपके स्किन के ऊपर अगर कोई दाग है तो उससे वायरसेस और बैक्टीरिया रिलीज ना हो इसके लिए। देन जैकेट्स पॉकेटेड कुड बी एम्प्टी। ठीक है, तो जैकेट्स होते हैं वो पॉकेट एम्प्टी हो या फिर ना हो तो अच्छा रहता है। क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। देन इक्विपमेंट्स शुड बी वेल मेंटेन होने चाहिए, जो वॉश्ड एंड प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड उसका प्रॉपर मेंटेन किया होना चाहिए। देन अवॉइड यूजेज ऑफ रस्टेड यूटेंसिल्स। रस्टेड यूटेंसिल्स बिल्कुल उनका यूज कम करना है बिकॉज रस्ट एक काफी हेल्थ को प्रॉब्लम करता है। अंडरस्टैंड? Then is the how to prevent chemical hazard, like designate suitable area away from the chemicals. Chemicals के लिए अलग सा chemical area होना चाहिए. Label the chemicals with their name properly. Rinse with water all the equipments after using the chemicals in it. ठीक है, rinse करने हैं. Do not mix food and chemicals equipments. Always keep them separately. Chemical और food को हमेशा separate रखना है. And then cover the food whenever use pesticides. जब भी कभी पेस्टिसाइड्स यूज करोगे, डिटर्जेंट्स या फिर कोई भी केमिकल यूज करोगे डिसइंफेक्शन के लिए, तो आपको याद रखना है कि आपको कैसे पेस्टिसाइड्स अगर वगैरह यूज होता है तो फूड को कैसे कवर रखना है। Then is the how to prevent biological contamination, like clean and sanitize working area after use. ठीक है, तो आपको वर्किंग एरिया है वो आपको क्लीन रखना है। कॉर्नर शुड बी क्लीन, जो भी कॉर्नर होते हैं वो आपको क्लीन रखने हैं इफ देयर इज एनी कॉर्नर इन यूटेंसिल्स। एंड नो होल्स इन सीलिंग एंड वॉल्स। वॉल्स जो होते हैं वो क्लीन होने चाहिए, सीलिंग में वॉल जो होल्स नहीं होने चाहिए ताकि वहां पर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, देन रेगुलर पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए ताकि जो पेस्ट है उनकी एंट्री आपको प्रिवेंट करनी है, हजार्ड प्रिवेंट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन फ्लाई किलर्स जो मशीन होती है ब्लू कलर लाइट्स के अंदर, तो ट्यूब्स के अंदर, तो वो होनी चाहिए, फ्लाई किलर्स होनी चाहिए बिकॉज फ्लाई के थ्रू ही ज्यादा से ज्यादा कंटेमिनेशन होता है। देन देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ हजार्ड एनालिसिस, तो 7 प्रिंसिपल्स है हजार्ड एनालिसिस के। First one is the conduct a hazard analysis. Then the principle two is the determine the critical control point. जो CCP है वो आपको कंट्रोल करना है. Then is the established critical limits. जो भी आपका critical control point निकला है, conduct hazard निकला है, तो उसका एक critical limit होता है at the safest level. तो वो आपको critical limit आपको एक ensure करना है. Then is the established monitoring procedure. तो monitoring procedure के अंदर क्या आएगा कि
जो आपका मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, हजार्ड जो होता है वो एनालिस करने के लिए या फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए, व्हाट इज योर मॉनिटरिंग प्रोसीजर, तो वो आपको एस्टेब्लिश करनी है. देन इज द एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन. सो व्हाट इज योर करेक्टिंग एक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर हजार्ड. तो करेक्टिव एक्शन का भी आपके पास प्लान होना चाहिए बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. देन इज द एस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर. तो जो भी वेरिफिकेशन होता है कि अच्छा दैट इज द वेरिफिकेशन प्रोसीजर दैट यू हैव टू ऑलरेडी डिटरमाइन व्हाट इज द वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर दैट पर्टिकुलर हजार्ड. ठीक है. सो दैट इज द मेन थिंग in this particular principles, establishing the verification procedure. उसके बाद आता है एस्टेब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर. तो देखिए रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसीजर है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज whenever the hazard happen you have to maintain and keep record of that particular documentation because lots of similar hazards can be happen आफ्टर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट. ठीक है. तो बार बार हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी हजार्ड एनालिसिस का ये पर्टिकुलर जो चार्ट है वो आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए कि क्या क्या हजार्ड हो सकता है और कैसे आप उस हजार्ड को जो है वो कैसे प्रिवेंट करोगे. तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर incident. Okay. Then food safety regulatory measures. So the Food Safety Standard Act 2006. The Food Safety and Standard Act is the comprehensive legislation in India that aims to ensure the safety and quality of the food products for consumers. It established standards for food products, regulate their manufacturers, storage, distribution, sale, and import to ensure they are safe and wholesome for consumers. Okay. And then is a food safety and standard licensing and registration of foods businesses. रेगुलेशन जो 2011 का है उसके अंडर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हर बिजनेस का. ठीक है. तो ये रेगुलेटरी मेजर्स है. दिस स्पेसिफाई the requirements of licensing and registration for different type of food businesses. Then packaging and labeling standards. These regulations prescribe the regular requirements for food packaging and labeling, including information on ingredients, nutritional content, allergens, and other mandatory declaration. ये होनी चाहिए as per the regulatory law. Then have food safety and regulatory measures. उसके अंदर है food product standards and food additives. It covers the food additives information permissibly जो लिमिट है फॉर कंटेमिनेंट्स उसके ऊपर भी उसके अंदर आपकी एडिटिव्स की परमिसिबिलिटी लेवल होनी चाहिए. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशन वो क्या है. सो दिस रेगुलेशंस ले डाउन द प्रोसीजर्स and requirements for importing food products into India. It includes regulation on product testing, certification, labeling, etc. ठीक है. तो ये है अगर आप इंपोर्ट करते हो तो वो रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा. टेस्टिंग है, सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग जो स्टैंडर्ड्स है दैट. व्हाट आर द 5 कीज टू सेफर फूड. सो फर्स्ट की इज अ कीप क्लीन, देन सेपरेट रॉ एंड कुक्ड फूड जो भी है एंड कुक थरली कुक करना है. कीप फूड एट अ सेफ टेम्परेचर, यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल. तो ये आपको यूज करना है. देन बेनिफिट्स ऑफ गुड फूड सेफ्टी. तो फर्स्ट इज द satisfied कस्टमर. अगर आपका satisfied कस्टमर है तो डेफिनेटली योर दिस इज बेनिफिट फॉर योर कस्टमर एंड आल्सो योर ब्रांड. लॉयल एंड कॉन्फिडेंट कस्टमर्स, गुड रेपुटेशन बनती है. देन ऑपरेशन कॉस्ट अंडर कंट्रोल रहती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, लीगल कंप्लायंसेस, देन नो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस और सिविल लॉसूट्स आपके ऊपर नहीं होता. प्लीजेंट वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो होता है. हेल्दी एम्प्लॉयज होते हैं, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज रहते हैं, बेटर जॉब सिक्योरिटी रहती है एंड देन लेस एम्प्लॉय सुपरविजन रिक्वायर्ड. तो एम्प्लॉयज को उतनी सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिकॉज दे आर फॉलोइंग द फूड सेफ्टी लॉज. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द फूड सेफ्टी लॉ. ठीक है. उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ द पुअर फूड सेफ्टी. अगर पुअर फूड सेफ्टी रहेगी तो क्या होगा. कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड लॉस ऑफ कस्टम, लॉस ऑफ इनकम, ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी इंक्रीज एंड द एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका जो स्ट्रेस बढ़ेगा एंड प्रोडक्टिविटी कम होगी एंड फूड वेस्टेड होगा. इंक्रीज जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हो गए दैट विल बी इंक्रीज फॉर योर कस्टमर्स. लॉस्ट प्रॉफिट, कोर्ट केसेस एंड बैड पब्लिसिटी. ठीक है. देन लीगल फीस एंड पॉसिबल लॉस ऑफ डैमेजेस, पर्सनल पेन एंड सफरिंग होगी, जो हॉस्पिटलाइजेशन एंड इवन डेथ भी हो सकती है. जो भी आपके लोग हैं, आपके जो एम्प्लॉयज है या फिर उनके आपके जो भी कंज्यूमर्स है उनकी डेथ भी हो सकती है इन सम ऑफ पुअर फूड सेफ्टी. ठीक है. पॉसिबिलिटी बैड इम्पैक्ट ऑन लव्ड वंस, आपके जो लव्ड वंस है उनके ऊपर जो बैड इम्पैक्ट आ सकता है.
और लो एम्प्लॉय का जो मॉरल होता है, अगर फूड सेफ्टी अगर लो लेवल पर रहेगी तो एम्प्लॉयज मॉरल विल बी एट द लोएस्ट लेवल। तो वो इंक्रीज करने के लिए आपको गुड फूड सेफ्टी रखनी पड़ेगी। एम्प्लॉयज एंड फूड सेफ्टी, तो देखिए एम्प्लॉयज के ऊपर फूड सेफ्टी का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। टू अवॉइड द endangering the safety of food, employees must keep themselves and their workplace clean, protect food from anything that could harm consumers, follow good habits such as washing their hands before preparing food, then stay alert to food safety hazards, ठीक है, and then follow the rules for food safety in their workplace। तो ये एम्प्लॉयज का मॉरल बढ़ाती है, तो ये इसका फायदा होता है फॉर एम्प्लॉयज। Then types of foodborne illness, इसके अंदर foodborne infection and illness। Food infection, also called foodborne illness, occurs when a person consumes food or beverages that contain harmful bacteria, viruses, or parasites. These microorganisms can cause an array of the symptoms, including nausea, vomiting, abdominal pain, and diarrhea. In severe cases, food infections can lead to hospitalization or even death, ठीक है। And common bacteria responsible for food infection include जो salmonella, E. coli, and cam campylobacter viruses such as noroviruses and hepatitis A and rotavirus can also cause food infection। तो ये जो होता है वो होता है मोस्टली इन्फेक्टेड होता है, जैसे कि साल्मोनेला होता है, वो उसके अंदर भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज होती है टू व्हाट फूड को डैमेज करने की। तो ये होता है। देन foodborne intoxication, what is the foodborne intoxication? So foodborne intoxication, like also known as the food poisoning, occurs when a person eats food or drinks beverages that contain toxins produced by certain bacteria. The toxins produced by these bacteria such as streptococcus aureus and clostridium botulinum are what cause the symptoms of food intoxication। So these are the food intoxications, ठीक है। Unlike food infections, intoxications does not involve the presence of the pathogens. Instead, the toxins produced by certain bacteria are the culprits behind food intoxication. Symptoms of food intoxication include nausea, vomiting, abdominal cramps, and diarrhea. In severe cases, food intoxications can lead to hospitalization or even death। So food intoxications, this is also the one of the serious factor in the food safety. Then foodborne illnesses like toxins, like mediated toxins, bacteria in eaten food enter and grow in the intestinal system, releasing toxins that injures surrounding tissues or disrupts normal organ or tissue functions। This form of infection is known as the toxin mediated infection, ठीक है। तो टॉक्सिन जो होता है तो वो भी आपके फूड के टिश्यू को डैमेज करता है, तो दिस इज आल्सो foodborne illness। Then typical symptoms of foodborne illnesses, so you can see abdominal pain, diarrhea, vomiting, nausea, headache, fever, chill, and numbness, paralysis। So these are the symptoms of the foodborne illnesses। Then food employees personal habits, so you can see here the do's. What are the do's? Cover cuts with the waterproof bandages, keep nails short and clean, wash hands properly regularly, and report illness if you are अगर आपका एम्प्लॉय कोई भी इल है तो उसने रिपोर्ट करना चाहिए टू द सीनियर अथॉरिटी। फूड एम्प्लॉयज पर्सनल हैबिट्स, सो डोंट में क्या आएगा, डू नॉट। सो wear jewelry or watches. So do not wear jewelry or watches. Do not cough or sneeze over the food. Do not pick nose. Do not spit. Do not bite nails or lick fingers. Do not scratch. Do not touch face or hair, ठीक है। Do not eat in a food preparation or storage area, and do not smoke। You understand? Do not smoke। तो these are the don'ts, ठीक है। And then food safety cleaning and sanitizing, ठीक है। So this is the one of the most important factor, that is the step of hand washing। So hand washing is one of the most important factor in the entire chain, that is the what, rinse hand, use soap, palm to palm, finger so जो है interlace, तो वो होना चाहिए। Then बैक टू हैंड, बैक साइड जो हैंड है
फर्स्ट है रिंस करना है, उसके बाद सोप यूज करना है, देन पाम टू पाम, देन फिंगर इंटरलिंस करना है, फिर बैक ऑफ द हैंड करना है, एंड देन द बेस ऑफ द थंब, ठीक है. सो दिस इज द क्लीनिंग प्रॉपर थिंग दैट आई एम शोइंग. देन फिंगर नेल्स, ठीक है, प्रॉपर फिंगर नेल्स जो होता है वो करना है, एंड देन यू हैव टू you know what, rub your wrist. So this is the proper 8 steps of the हैंड वॉशिंग, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काफी फूड इंडस्ट्री के अंदर इसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है प्रॉपर एम्प्लॉयज टू वॉश देयर हैंड्स, बिकॉज वॉशिंग हैंड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फूड सेफ्टी, ठीक है. तो इसके ऊपर भी आपको बड़ा बड़ा ध्यान देना है. देन 5 S फॉर फूड सेफ्टी, दैट इज वन इज सॉर्टिंग, देन सेट इन ऑर्डर, देन शाइन, देन स्टैंडर्डाइज, देन सस्टेन, ठीक है. सो दीज आर द 5 S फॉर द फूड सेफ्टी, ठीक है. Sort the food, set in the order, and it should be shiny and as per standardization and sustainable, ठीक है. So I hope you understand what I'm saying, and please thank you so much for watching this video, and I'm your host and food technologist Sagar Shirke, the regulatory and quality expert. And thank you so much for watching this video. I'm your host and host of this channel, and please like, share, and subscribe, and share your this video to your food technologist and your friend to understanding about and know about the more about the food safety in the terms of examination or and in the terms of a lot of things. Okay. And thank you so much for watching this video. I'm your host and the Sagar Shirke. Please like, share, and subscribe this channel. Thank you so much. I'm your host and the Sagar Shirke signing off. The FSSI.